नॉन मेटालिक भी आया है, नॉन मेटालिक भी आया है, एंड मिनरल फ्यूल्स भी आया है. And after that, actually in syllabus we have the natural vegetation, but before this topic we have completed that natural vegetation, the type of forest cover that we have discussed. Then we have actually geological formations in India hai. So before that we can go to agriculture. This is the last topic in this unit. After completing this agriculture, iska type, production, green revolution and white revolution, we can go to this geological aspect, because we are forgetting a continuity. Actually resource ke bare mein padha hai. So after resource, we instead of directly going to a physical aspect, we can go to the human aspect itself. That's why I choose agriculture, choose to take agriculture today. So after discussing this topic, we can go to the earlier one. So here it is agriculture, different types of agriculture practices in India. Then some of the productions, not going detail of each crops because that area is coming later on. So I skip that portion. So today, in general, the production condition in India, agriculture production condition in India, that is what we are going to discuss today. After that, we will discuss about some of the aspects of white revolution. Not that much relevant, but there may be questions. One or two questions may be expected, can be expected from this white revolution. After that, we can go for green revolution. Green revolution, हमारा इकोनॉमी इतना इन्फ्लुएंस है कि इट हैज चेंज्ड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. तो पहले ऐसा था, बहुत मुश्किल था खाना खाने के लिए. So that condition, it brings this green revolution, the modernization in agriculture. The techniques has made a human change in the agriculture or the primary sector of India. So that much of relevance for green revolution. So we are going in some details of the green revolution, like the social economical conditions, its impact also we will discuss today. So when we say about agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing crops and raising livestock. All these comes under the scope of agriculture. Actually, it is the art and science hai, like a discipline hai. There should be iska to agriculture direct I say kuch dalna nahi hai, seeds dalna nahi hai. That is not agriculture actually. That is just planting. But what is agriculture? ये तो एक area होगा, particular area होगा. The farmer should know the soil condition, the climate condition, the availability of water. All these knowledge should be there for the farmer, and he should know which crop is much suitable for a specific condition. Yes, सब knowledge इसको तो चाहिए. So it's agriculture is just like a discipline. It includes the art and science of cultivating in a particular soil or growing crops or raising livestock aspect. And not only planting, not only growing crops, it also includes the livestock, raising livestock also. It includes the preparation of plant and animals products for people to use there and their distribution to market. Utna sak aayega, not only planting or growing crops or animals. After that, we will take the product output from there and we will earn money or we will bring that to the market itself. So all this comes under the scope of agriculture. From initial stage, तो land को ready करना है, उसके बाद seeding करना है, उसके बाद उसको तो डेवलप करना है, उसके बाद सो करना है, उसके बाद इसको तो लेके मार्केट में जाके बेचना है. So all this comes under the scope of agriculture. 54.6% of the total working force
is engaged in agriculture and allied activities. This is actually 2011 census का है. This has varied, but authentication तो चाहिए. So survey कुछ तो हमारे लिए गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं बोल पाएगा अभी 50 के नीचे है. We can't say like that. We need a particular data that is authorized. That's why we have taken 54.6% of the total working force of India is depending on this agriculture and its allied sector, allied activities, like transporting the agricultural product. वो भी इसके साथ आएगा. Those who are making tools, वो भी इसके साथ आएगा. Everything comes under this allied sector. इसके साथ में आएगा. Accounts for actually 70.8% of countries' gross value added for the year 1920. तो उतना ज़्यादा output there है. 17.8% of the total output. Country का जितना भी economy earn कर रहा है उसमें से 17.8% accounts for from the agriculture. See, almost 54%, more than 50% of the population is depending. Working force is depending on agriculture, almost. But on the other hand, the economy which is being produced is comparatively less. Then the total area of India, as we know, it is 328.7 million hectares. Out of this, 139.4 million hectares is reported as net zone area. So current net zone abhi currently utna sa area under hai. So if you look, 1/3, almost 1/3 of the total area is under net zone area. So pura dekhne se we may think that the agriculture paddy field is not that much, but we have multiple cultivation system also. एक particular field में we will have multiple cropping. एक 6 महीने के लिए एक क्रॉप डालेगा, उसके बाद 6 महीने एक डबल क्रॉप हो गया, फिर मल्टीपल क्रॉप हो गया. So when we consider that, almost 1/3 of the total area is under net zone area के अंदर आएगा. And the cropping intensity is 143.6%. उतना ज़्यादा intensity है हमारा. The smallest and marginal holdings take up to 0 to 2 hectares, constitute about 86% of the total land holdings in 2015 and 16. This is the data available. इसमें है. So ऐसा consider तो small and marginal, छोटा farmers है. तो एक छोटा farmers को किसको बोलेगा? Those who are holding land up to 2 hectares. इतना सा हेक्टर है, उसके आगे ज्यादा होने से they will comes under major और मीडियम और मेजर में उसमें वो फॉर्मेट्स लोग जाएगा. बट यहाँ क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स सबसे ज्यादा है. इट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 86.08%. एंड ओवरऑल एवरेज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज ओनली 1.08 हेक्टेयर्स है. उतना कम है हमारा. अभी इफ यू टेक 100 farmers, some few farmers have more land, remaining have very less acreage of land, hectares of land. उतना कम है. That's why when we take the average, it is coming only almost 1 hectare of land for each farmer. उतना कम आ रहा है. That is the condition of agriculture in India. Now we can look at the type of agriculture in India. This is not only in India, in most of the countries in the world is practicing the same, but in India, mostly we are cultivating the following types of agriculture. It includes mainly the commercial agriculture for commercial purpose, for market. Then the plantation agriculture, this if you take plantation agriculture, it is also part of commercial agriculture का ही out. They are also for money purpose के लिए ही this plantation. Then the subsistence agriculture. तो subsistence agriculture ऐसा होगा for the farmers, farmer only. जो cultivate करेगा उसको खुद से अब कुछ खाना है. वो किसी और किसी के लिए वो नहीं सोचता है
because they are small farmers. अपना से जो फार्म खेती में डालेगा वो अपना से आउटपुट लेके खाएगा. That's it. Then the shifting agriculture और जुमा ये है शिफ्टिंग कल्चर. एक जगह से वो लोग शिफ्ट करके दूसरे जगह पे जाएगा. देन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर जैसा है. एन एक्सटेंसिव एरिया में कल्टीवेशन होगा. वी कैन गो इन डिटेल ईच ऑफ दिस. देन टेरेस एग्रीकल्चर, यूजुअली इन स्लोपी रीजन में अभी लैंडस्लाइड ये सब होगा. टू अवॉइड दिस, फॉर गेटिंग गुड वाटर, we are following this terrace. Then intensive farming is also like multiple cropping होगा. एक जगह छोटा सा एरिया होगा, so उधर ज्यादा population होगा. For managing this population, we will cultivate intensively. We will exploit the land condition. That is the intensive farming. Then wetland farming and dryland farming. These are the major 9 types of agriculture in India. Let's see each of the detail. First one is the commercial agriculture. Commercial agriculture ऐसा है to raise crops on a large scale. Large scale output aims to export the product and earn huge income. Like plantation also have the same aim. Maximum output होगा and huge income earn करेगा. तो इसके लिए तो modernization technique we will follow. जैसे human intensives के अलावा they will use machines. They will use high yield variety seeds. They will use pesticides and fertilizers. ये सब यूज करेगा. And they will increase the output. Maximum production एक land से they will bring it. Usually the commercial agriculture is practiced for corn, sugarcane, wheat, cotton, etc. Not for rice. Rice के लिए तो उतना ज़्यादा नहीं है. Yes, there is, but usually commercial agriculture is mainly for this corn, sugarcane, wheat, ऐसा जैसा crops के लिए they are practicing. And the main states which follow this commercial agriculture are Maharashtra, Punjab, Gujarat and Haryana. These are the states which follow the commercial agriculture. Then comes the plantation agriculture. Plantation agriculture ऐसा है, either the physiography ऐसा होगा irregular होगा, नहीं ये तो continuous physiography होगा, but इसमें कुछ ऐसा crops होगा तो throughout वो उसका plant उधर ही होगा, उसमें से continuously earnings हम लोग लेगा. Practice to grow fruit crops होगा, नहीं तो like apple fruits, orange, ये सब plantation के लिए useful है. तो ऐसा plantation करेगा, नहीं तो spices, tea, coffee, rubber, coconut, all these comes under the scope of plantation agriculture. We know in Arunachal we have the orange plantations are there. There is tea plantations are there. So multiple, now moving to rubber plantation. So in different part of the country, we can see different type of plantation agriculture. यहाँ भी maximum aim is to export and a huge income है. Same huge income generation है इसका output, expecting output. So major states include Maharashtra, Assam, we know Assam teas. Then Tamil Nadu, Karnataka, Kerala. So easy state mein you can find maximum agriculture or plantation agriculture. Like rubber is udhar zyada hoga, coconut होगा. अभी coastal area है, coastal India है, तो maximum production होगा coconut के उसमें से. So ऐसा plantation है. Then third one is subsistence farming. So this is actually early stage of farming था. उसके बाद अभी जो marginal farmers बोला है, small scale farmers बोला है, most of them is cultivating for themselves, consumed by the farmers family only. Farmers family not for market में ये नहीं बेचता है,
उतना ज्यादा आउटपुट नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडिंग टू मच ऑन मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स नहीं यूज कर रहे अभी। जैसे ox है वो, so they are they are using this ox, नहीं ऐसा ट्रैक्टर ट्रिलर ये सब कुछ नहीं यूज करेगा। एंड द लैंड होल्डिंग्स भी बहुत छोटा होगा इन लोगों के लिए। हाई वेराइटी सीड्स इसका ऐसा ट्रेडिशनल क्रॉप ही यूज करेगा। तो ऐसा बहुत कुछ लिमिटेशन है, बिकॉज दे आर नॉट एमिंग फॉर एनी इकोनॉमिक प्रॉफिट। Then the shifting cultivation. This is also one of the traditional type of cultivation tha, especially in some tribal groups hai, they are wandering from one place to another. So they are thoda sa change होके they have started cultivating. यहाँ क्या होगा, वो लोग they are in forest है, mostly they are in forest है, so they will clear the forest by felling the trees and burning of trunks and branches. तो इसके वजह से क्या होगा, एक प्लेन लैंड में वो लोग जाएगा, उधर का वो ट्रीज है उसको तो काटेगा, एंड देयर विल बी प्लेन एरियाज एंड दे विल बर्न इट। तो क्या होगा, ऐश होगा, ऐश पोटैश, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा वो सोइल को, एंड दे विल स्टार्ट कल्टिवेटिंग क्रॉप्स देयर। तो कल्टिवेट करेगा, ये एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 करेगा, ऐसा बहुत बार करेगा। When they understand that the soil fertility has lost, they will keep the land as it is and they will move to other place and start the same process. ऐसा दूसरा process शुरू करेगा। The main crops are dry paddy, maize, millets and vegetables. These are the major crops that is using shifting cultivation. शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऐसा नहीं बोलेगा यहाँ एक्सिस्ट है। मोस्टली इफ यू लुक इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसा माउंटेनियस एरियाज में यू कैन सी दिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। देन द एक्सटेंसिव फार्म aims mainly for economic aim है इसका। तो it is the modern system of farming done on a large farm. तो स्मॉल स्केल फार्मर्स नहीं है, बिगर फार्मर्स है, they have large farm area hai. It is also known as mechanical farming due to extensive use of machines, because उतना बड़ा area है तो उतना बड़ा machines भी चाहिए, human intensive से कुछ काम नहीं चलेगा। Only तो यहाँ ऐसा extensive farm raise only once per year, तो उधर ऐसा होगा कल्टीवेशन एक टाइम ही होगा लेकिन आउटपुट उतना ज्यादा होगा। अभी मैंगो कल्टीवेशन फॉर एन एग्जांपल, मैंगो कल्टीवेशन, तो मैंगो कल्टीवेशन ऐसा होगा, उसको तो अभी फर्टिलाइजर डालता है तो पूरा एक इंडिविजुअल को नहीं जाए, पूरा वो मिशन चाहिए वो करने के लिए, नहीं है तो पेस्टिसाइड डालना है। सो मोस्टली दे विल डू इट फ्रॉम हेलीकॉप्टर से, वो लोग पेस्टिसाइड ये सब डालेगा मिशंस का यूज करके, क्योंकि उतना एक्सटेंसिव एरिया है। So it's not possible for the humans to go each of these plant and put all these things. Mostly practicing in Punjab, Uttar Pradesh and Haryana. So if you take, you can understand this Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, all these comes under Green Revolution. Green Revolution का chosen states है। अभी साउथ में आने से आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट मोस्टली ये इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के नीचे आएगा। दैट्स व्हाई दिस एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, ये सब इसी प्लांटेशन तो उसी एरिया पे काम है, अदर देन दिस कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये सब इसी एरिया पे आ रहा है। देन टेरेस एग्रीकल्चर, सो दिस एक्सटेंसिव फार्मिंग के बाद टेरेस फार्मिंग ऐसा है, मोस्टली देयर इज हिली एरियाज विद स्लोप्स। तो यहाँ 2 प्रॉब्लम है, वन इज लैंडस्लाइड होने का चांसेस है, सोइल इरोशन का चांसेस है, दूसरा है वाटर, ग्राउंड वाटर कम होगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देयर विल बी स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होगा ऐसा। तो सोइल यहाँ वी विल कल्टिवेट एट दिस पॉइंट्स, एंड तो यहाँ तो सोइल इरोशन लेस होगा एंड देयर विल बी इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड इंक्रीजिंग द वाटर है। तो ये दोनों इसी बिकॉज ऑफ दिस टेरेस फार्मिंग वी कैन अचीव।
Like in zero region, we know that some prairie places, they are cultivating even the paddies. So that kind of cultivation is called the terrace farming to avoid soil erosion and conserve the soil and also to preserve the groundwater. यहाँ Himachal Pradesh, Uttaranchal, Meghalaya, even we can say Arunachal Pradesh, Western Ghat region, Eastern Ghat region, everywhere the agriculture practice is following the terrace type of farming. Then comes the intensive farming. This is also commercial है, huge income earn करने के लिए they are practicing this intensive farming, aims at maximum possible production on a limited farm with all effort. यहाँ ऐसा होगा, there will be smaller area होगा and the population which is depending upon this land is too much. तो इतना population को feed करने के लिए उतना ज़्यादा output चाहिए. So we will exploit the land condition. Maximum इसका exploitation करेगा. Maximum HYV high yield varieties crops को देगा. उसके बाद missions भी ज़्यादा use करेगा. Fertilizers, ये सब ज़्यादा, the output will be increased. Multiple cropping practice करेगा. इसके ऊपर huge capital भी invest करेगा. Human labor, maximum human labor को भी यहाँ equip करेगा. So there will be intensive. That much of pressure is giving to the land. Practiced in western and eastern regions of India and also floodplains में है. Then state बोलने से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, and Odisha. If you are thinking the area, the agriculture, the farming practice is for economic maximum earning, maximum economy, then you can expect Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, जरूर आएगा. Maximum commercial output के लिए we are using, India is mostly depending on these states. So after intensive farming, based on the land we have wetland farming and dryland farming. Wetland उधर ऐसा है, the land is mostly in valley region or plain region में होगा. Along with that, we will have maximum rainfall भी उसी area पे होगा. So there will be sometimes water logging as well. So the crops which can grow in this highly drained soil, highly saturated soil, can only grow at these places. Main crops includes rice, jute, sugarcane, etc. The north and northeastern India and the coastal plain में we can see. अभी Kerala, Karnataka coast, ये सब coast में you can see the wetland. Other than this, northeastern India में where there is flat area and maximum rainfall, you can see this wetland farming. Then the dryland farming, direct opposite. उधर rain कम होगा उसी area पे. So the crops which can grow without too much of water, without that much of water, will be grown at these places. Include gram, jowar, bajra, peas. ऐसा वाला crops यहाँ ज़्यादा cultivate करेगा. Irrigation facilities, तो minimum irrigation facility देने से भी they can grow. That is called the dryland farming. Western and northwestern India and central India, we can western and northwestern, we know that is arid and semi-arid region. Even the central part, we have continentality. So rainfall is comparatively less at these places. So there we can cultivate this dry land farming, practice this dry land farming. So these are the major agriculture types that is being practicing in India. So what are they? Commercial agriculture, plantation agriculture, subsistence agriculture, shifting agriculture, extensive farming, terrace agriculture, intensive farming, wetland farming, and dryland farming. So
That's it. So now we can see major production and yield. इसमें we can see there are multiple crops है, mainly food crops भी है, other crops भी यहाँ है. I have collected a data which is being prepared by Department of Agriculture, Corporation of Farming Welfare, Central Government का है, वो लोग बनाया है. Now here you can see the production, cultivation in hectare कितना है, and the yield. Yield means एक hectare of land में कितना kg का production we are making. So इसमें लिखने से if you take rice का तो if you look the yield तो ज्यादा increase हो रहा है. 2576 kg था, that has been increased to 2638, then 2705. ऐसा कंपेयर करके you can understand which area कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है. So I am putting this data as it is. You can see इसमें से क्वेश्चन पूछने का चांसेस कम है. Still you will get an idea regarding this. Then the total production of food grain increased from 51 million tons in 1952, 51 to 252 to 2 million tons in 2015 and 16. So इतना टाइम में almost 60 years में इतना ज्यादा improvement हो गया है. तो 5 times multiplied the production in India में. That is the because इसके बीच में 1950-60s के बाद we have the green revolution था. So that brings this much of production, food grain production India में था. So we know the green revolution is mainly for the food grains. Food grains को इसका तो maximum support किया था. The production of wheat and rice took off after green revolution in 1960s. इतना है. Almost 78% of the food grain produce करने का ताकत मिला है after this green revolution. Agriculture yield of food has been increased more than 4 times. That's I have mentioned you. Yield बोलने से एक हेक्टर में कितना increase हुआ है. So right now in 2014-15 we have 270 kgs per hectare. This is the available data. And although India is the second largest producer of paddy in the world, its yield. अभी paddy का ऐसा है, ये थोड़ा चीज है. सबसे second है हमारा production, but इसका problem है कि हमारा yield बहुत कम है. ये not only for paddy, this is applicable for other crops as well. ऐसा है हमारा per hectare output हमारा तो कम है. You can see the production of wheat, rice, pulses and oilseeds. This is the data given by Ministry of Agriculture से मिला है. Then we can see the export. Here in 2020-21, the Economic Survey of India states that we have recorded at 296.65 million tons of production. उतना ज़्यादा export we have done in 2020-21 than in 2019 financial year है. FY बोलने से financial year 2020 में 296 million tons we have produced. In 2019 we have only 285.21 million ton था. तो उतना 11.44 million tons हम लोग उतना ज़्यादा export किया है. That much of production we have during 2021 में. Recent data अभी तक available नहीं है. So that's about the production. Production हम उतना ज़्यादा नहीं जा रहे because in the coming classes when we studies each of the crops we want to go through all this.
राइस का कितना है, वीट का कितना है, पल्सेस का कितना है, ये सब वी विल डिस्कस लेटर. Now we can go for the revolutions. So we have green revolution, white revolution, blue revolution, ऐसा multiple revolution है, pink revolution. So ऐसा multiple revolution we have in India. But when we consider the agriculture sector, two main revolution, because one is regarding animal husbandry है, दूसरा है agriculture. So agriculture sector में if we take, we have two kind of revolution. One is green revolution for food crops, mainly food crops, and white revolution for milk production. And we have tremendously achieved during this two revolution. The consequence of white revolution is comparatively less than the green revolution. So first we can go for the white revolution. After that we can go for the green revolution. So white revolution क्या था? It created a national milk grid linking producers through India to consumers. So ऐसा था, पहले हम लोग अपना डोमेस्टिकली मिल्क प्रोडक्शन करेगा, वो डोमेस्टिकली बेच दे रहा था. But when there is green revolution, they have connected the cities with these rural areas. तो क्या हो गया, रूरल एरिया से we are collecting the milk and we are distributing that in the urban areas as well. Cities में भी ये बेचना शुरू किया है. So what happened is there is profit for the farmers. Farmers के लिए बहुत ज़्यादा profit मिला. So they have started concentrating in this sector. तो maximum milk production करना शुरू किया है. There is storage capacity भी increase किया है. वो सोसाइटी भी ये लेने का, ये खरीदने का, सोसाइटी, गवर्नमेंट सोसाइटी एंड प्राइवेट सोसाइटी का भी ज्यादा केयर दिया है. तो फार्मर्स को उधर जाके उधर भेजने से द सोसाइटी विल टेक इट टू अदर प्लेसेस एंड इट विल रीडिस्ट्रीब्यूट. ऐसा था. तो लिंक्ड ओवर 700 टाउन्स एंड सिटीज क्रिएटेड ए नेशनल मिल्क ग्रिड. ऐसा नेशनल मिल्क ग्रिड बनाया है. दैट इज द important output of the white revolution. इसका क्या फायदा था? It help in reduced seasonal and regional price variation. तो सीजन में ऐसा है, कुछ सीजन में, अभी रेनी सीजन, तो यहाँ आउटपुट कम होगा तो प्राइस बढ़ा देगा. तो प्रोडक्शन व्हेन देयर इज हाई प्रोडक्शन, प्राइस कम होगा. तो ऐसा अल्टरनेशन था. दूसरा है, अभी रूरल एरिया में कम है, वो उड़ा के अर्बन एरिया में लेके जाने से देयर इज हाई प्राइस. फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आल्सो दे हैज बीन टेकन. तो इसका तो कम करना, क्योंकि कैरिंग तो थोड़ा सा नहीं है, ह्यूज अमाउंट लेके जा रहा है. तो एवरेज में वो आने से ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट कम डाउन. तो ऐसा फैसिलिटी और फैसिलिटेशन किया है दिस ड्यूरिंग द व्हाइट रेवोल्यूशन. Also they have reduced the influence of middleman. अभी हम एक फार्मर है, हमको ये मार्केट में भेजना है, so it's not possible for me to find a customer. कस्टमर को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था. तो क्या करेगा, एक मिडिलमैन बीच में आएगा. I will sell that to that middleman and the middleman will take it to the customer. He will find the customer and sell for high price. ऐसा था. तो कस्टमर के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत कम प्राइस मिला था, प्रॉफिट मिला था. बाद में क्या, ये मिडिल मैन को निकाल दिया, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ सोसाइटीज वेयर दे विल कलेक्ट द मिल्क. तो अपना उधर जाने से एक स्टैंडर्ड प्राइस है, 1 लीटर के लिए अभी इतना रुपया है, ऐसा एक. तो कहाँ क्या करेगा, ये फार्मर लेके उधर बेच देगा. अभी उसका 5 लीटर है, जितना भी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड प्राइस है वो फार्मर को मिलेगा. ये सोसाइटी लेकर दूसरे इसको तो मिले, कस्टमर को देगा. तो कस्टमर के लिए भी एक स्टैंडर्ड प्राइस देखा है, उतना ज्यादा मार्जिन नहीं होगा. तो कस्टमर के लिए लो प्राइस में मिल्क मिल रहा है और फार्मर के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी मिल रहा है. दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस व्हाइट रेवोल्यूशन. सो इट इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड. तो ये याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड. सो
Operation Flood is related to. So you have to answer White Revolution. Operation Flood is related to White Revolution. And the man behind this is Dr. वर्गीस कुरियन from Kerala है. तो उसने ये White Revolution का introduce किया है in India. Then what are the objectives of this White Revolution? To create a flood of milk by increasing production. तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन करके उतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर दिया है. इंक्रीज ज्यादा प्रोडक्शन है तो ज्यादा इनकम. हाउ? उतना ज्यादा मार्केट खुलेगा. बिकॉज देयर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, कुछ सोसाइटी का इंटरफेरेंस है. तो farmers don't want to find their customers directly or find their market directly. They have a source to sell it. So it will naturally increase the income of the farmers. So the second objective was to increase the income of the rural population by this milk production. To provide good milk to consumers at reasonable price. तो उधर एक हो गया, तो अच्छा मिल्क हो गया, सोसाइटी ने लेकर असली में उधर मिल्क का क्वालिटी भी चेक करेगा, उसके बाद कस्टमर को देता था. तो कस्टमर के लिए लो प्राइस में मिलता था. एंड दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द फार्मर्स. सो द क्वालिटी ऑफ द मिल्क इज आल्सो good. So these are the objectives of this White Revolution: to create a flood of milk by increasing production, to increase the income of the rural population by milk production, to provide good milk to consumers at reasonable price. These were the objectives of White Revolution. And in White Revolution actually, so इसका objective भी है, इसका क्या फायदा भी मिला है, that we have discussed. So what is this Green Revolution? So this Green Revolution is a process which has been done through 3 phases. The first phase of Green Revolution started in 1970s and ended at 1980s. इसमें सबसे important चीज है improve the marketing strategy of the milk in metropolitan cities. That is one of the important target. तो सेल करना है रूरल, मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होगा, दैट इज इन रूरल एरिया. तो कंज्यूमर्स कहाँ होगा, कस्टमर्स कहाँ होगा, सिटीज में है. तो बेचने के लिए सिटीज जाना पड़ेगा. सो उन लोगों को पता चलना कि ये अच्छा मिल्क आ रहा है, ये इधर सिटी में इसी एरिया पे मिलेगा. सो देयर शुड बी ए गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो इम्प्रूविंग सेल्स, they have provided improved marketing strategy in metropolitan cities. And this phase was financed by the sale of butter oil and skimmed milk powder donated by European Union. तो ये सब करने के लिए यहाँ इस फेज में तो there should be initial economy. ये कहाँ से मिला है, यूरोपियन यूनियन ने दिया है for सेल ऑफ बटर ऑयल एंड स्किम्ड मिल्क पाउडर. ये पाउडर क्योंकि अभी यहाँ से मिल्क लेके दूसरा कंट्री में लेके नहीं जा पाएगा. बट इफ इट इज कमिंग एज डेयरी आउटपुट, डेयरी प्रोडक्ट बना के जाएगा, तो लाइक मिल्क पाउडर जैसे, बटर जैसे, कर्ड जैसे, इफ यू टेकिंग देयर विल बी लॉन्ग एक्सपायरी डेट. सो दैट इज बी प्रोवाइडेड बाय दिस यूरोपियन यूनियन. This happened in 1970s to 1980s. Then the second phase started at 1981 to 1985. Number of milk sheds increased from 18 to 136 milk outlets. Urban area में fastly they have marketing strategies था, तो धीरे धीरे उधर सेल्स बूथ शुरू किया है. उसका उसका बूथ का नंबर धीरे धीरे बढ़ गया है. So 18 to 136 hours per, again it was expanded to 290. उतना सा ज्यादा कर दिया है. Then the third phase. Third phase start from 1986 to 1996. तो 1996 में almost end of the White Revolution है. यहाँ इसने क्या किया, White Revolution में क्या किया है,
gave a finishing touch to the program. 3,930 dairy cooperative has been set up. Cooperative societies बना दिया है. Linked more than 3.5 crores dairy farmers member. तो उतना सा dairy farmers को connect करके रख दिया. तो काम हो गया. Now the farmers know where to go, where to sell their milk, and the consumers from the urban areas know from where we can collect and what is the quality of the product they are providing. So the phase ended, but the process continued. Abhi we are taking the Amul product yahan se le raha hai. A Milma had different statement, different tarah ka society said they were collecting the milk, they were processing it, and they are redistributing to other places. This is called actually the White Revolution. So I have added the reference as well. You can go to these sites, and also I am following Kuller's book here. I am following here, and Surendra Singh बोलके UGC net के लिए particular book है geography बोलके. I am following these two texts. You can follow that also. So after this White Revolution, now we can move to Green Revolution. Green Revolution ऐसा नहीं है. What is Green Revolution पढ़ने से काम नहीं है. इसका कुछ benefit भी था. On the other side, we have many implications. We have faced lot of problems relating to this Green Revolution. So we want to go through these 2 points. Positive side में देखना है, negative side में देखना है. Because there may be questions, essay question relating to Green Revolution. What was the socio-economic and ecological implication problem created by this Green Revolution? There is a train in Punjab which is known as the cancer train, because from where the train started, बीकानेर बोल के एक जगह है राजस्थान में, तो उधर से ये हम पंजाब से ये इधर आ रहा है. उधर 99% of the passengers is having कैंसर पेशेंट है उसके अंदर. नहीं तो इसको ट्रीट करने के लिए जो इसका सपोर्ट जा रहा है वो भी होगा, बाईस्टैंडर भी इसके साथ जाएगा. वही है. So it is a statement that Green Revolution has bring too much of cancer also along with that. एक साइड में पॉजिटिव है, एग्रीकल्चर उतना बढ़ गया है. On the other side, there is health issues, lot of health issues, lot of environmental issues as well. Why? We are using chemical fertilizers, we are using pesticides, endosulfan. तो ये पूरे एक एरिया में पूरा एक एरिया को ये ruin कर दिया है endosulfan. So that is a pesticide that has caused growing problem to the humans as well. Let's see what is this Green Revolution. A term used for rapid increase in wheat and rice. ये याद रखना है. Green Revolution में सबसे important दिया है food crops के लिए, and within the food crops they had given priority to wheat and rice. So a term used for rapid increase in wheat and rice in developing countries, brought about by improved varieties combined with the expanded use of fertilizers and other chemical inputs. Fertilizers and chemical inputs के वजह से improved varieties, advanced technology के support से there is rapid increase in the food, especially wheat and rice. The Green Revolution has facilitated institutional and social changes in rural areas and provided opportunities for self-sustaining economic growth and reduced poverty. So that is the positive side. So self-sustained economy दे पाया है, and we know after independence we are facing poverty. उतना सा poverty था. For overcoming and for making food security, we have followed this Green Revolution. In the world, it was
first bring down by Norman Borlaug in 1960s. He is known as the father of Green Revolution. But the father of Green Revolution in India is M.S. Swaminathan, like Varghese Kurian in White Revolution. So, like White Revolution, for Green Revolution is also have certain objectives. It has short-term objectives and long-term objectives. तो ये फर्स्ट ब्रिंग हो गया सेकंड 5 ईयर प्लान में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स फोकस. तो सेकंड 5 ईयर बोलने से सो 51 to 56 हो गया, 56 to 61. तो ऐसा है सेकंड 5 ईयर प्लान में वी हैव गिवन प्रायोरिटी टू इंडस्ट्री एज वेल एज वी हैव गिवन सम इंपॉर्टेंस टू दिस एग्रीकल्चर सेक्टर. सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है एग्रीकल्चर. So along with that, in the second also they have given importance to agriculture. उसी area पे for 5 years they have planned. So that is not pure green revolution, but in long-term objectives में include overall agriculture modernization, especially in rural area में. Then agriculture industrial development, providing infrastructure and raw materials as well. तो इतना सा था लॉन्ग टर्म. तो इसमें क्या है, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, दैट इज अ लॉन्ग टर्म एंड गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट. एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दोस अलीड सर्विसेज. तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बोलने से अभी एग्रीकल्चर में मिशंस चाहिए, तो इंडस्ट्री चाहिए मिशन बनाने के लिए. नहीं तो हाई यील्ड HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है वो बनाने के लिए. तो ऐसा जो डिपेंड है फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ऐसा मल्टीपल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लोग काम करेगा. प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्गर प्लांट्स व्हिच कुड विथस्टैंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स एंड डिजीजेस, दैट इज वाज द अनदर हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स बना. दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. अनदर थिंग इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्ल्ड. इसका वजह से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया, सो देयर विल बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन द कंट्रीज एंड देयर विल बी कोलैबोरेशन विद दिस कंट्रीज. तो ऐसा दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो इसका बेनिफिट देखेगा. फर्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस इज अ फंक्शन ऑफ एरिया सोन to the new wheat and rice varieties and increase the yield per unit of land. So this is the first and important one. Yield increase किया है. पहले तो ट्रेडिशनल क्रॉप्स यूज किया था, उसके बाद हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स यूज करना शुरू किया है. So they are resistant. They don't require that much of water. Yes, they need, but not like the traditional crops. उतना ज्यादा जरूरी नहीं था. So they are resistant to multiple diseases as well. So there will be yield, maximum yield देना शुरू किया है. Increasing yield have made rice and wheat more profitable for the farmers than certain other crops. Thus, in addition to yield increase, क्या हो गया? More land has been brought into the cultivation of these two crops. We are cultivating maximum wheat and rice and we have used high yield variety crops for the same. So maximum yield देना शुरू किया. तो maximum एक हेक्टर में अभी पहले 1000 था, अभी 2000 हो गया. तो उतना आउटपुट ज्यादा हो गया. So there is economic profit for the farmers. So what farmers thought? Yes, if I am getting this much of profit from this small acre of land, I can take more of my land for wheat and rice cultivation. So that happened in the next stage. It also facilitates significant expansion of irrigation and multiple cropping in many countries, hereby reduce total acreage of land. तो क्या हो गया? Wheat resistant है, rice resistant हो गया. Other than this, पहले तो ऐसा था जहां में बारिश मिला था, बारिश रेनफॉल सीजन में ही इसका कल्टीवेशन पॉसिबल था. So this green revolution also bring irrigation facilities.
तो ग्रीन रेवोल्यूशन का अदर आउटपुट था इरिगेशन. So when there is dry season, then also we are able to cultivate. So there will be multiple cropping. So acreage फिर बढ़ गया है, उतना ज्यादा एरिया. तो एक 1 acre ऑफ लैंड एक बार 1 ईयर में कल्टिवेट कर रहा था, तो इसका एरिया हो गया 1 acre. बट इफ वी कैन कल्टिवेट 2 times, तो इसका एरिया 1 ईयर में कितना है, 2 acre हो गया. इफ वी कैन कल्टिवेट इट 3 times, then that will be 3 acre ऑफ लैंड. वो उतना ज्यादा कंसिडर कर सकता था. That also another benefit of green loan. That is what happened. The growing shorter growing period and reduced photoperiodicity are the important problem. तो इसके वजह से है में photoperiodicity means sunlight जितना टाइम में इसको तो मिलना है. वो आइल वेराइटी सीड को बहुत कम चाहिए था, लेकिन ट्रेडिशनल सीड को ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस मिलना था. उसका ग्रोइंग पीरियड भी बहुत ज्यादा था. So all this created increasing in the cropping output. Cropping output ज़्यादा कर दिया है. So these are some of the benefits of the green revolution. So when we say about the positive impact of green revolution, we have tremendous increase in crop production. इसके वजह से when we are in the early stage, we are depending maximum import. Food grains का import करना, we are depending on the import of the food grain. ये reduce करने, we have able to reduce the import. Then per hectare इसका output ज़्यादा हो गया, so there will be benefit for the farmers. So dependent industry also have grown. तो रूरल एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा कर दिया है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी भी हो गया. तो वी हैव फूड क्रॉप्स, सो पॉवर्टी कम हो गया. फार्मर्स हैव द प्राइस. रूरल एरिया में मैक्सिमम एग्रीकल्चर एंड वी नो दैट इज इन रूरल एरिया. सो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, रूरल इकोनॉमी जनरेट किया, एंड द आउटपुट इज रिडक्शन इन द पॉवर्टी ऑफ द रूरल एरिया. सो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. Now we can see the socio-economic implication of socio-economic output problems. इसके वजह से, if we take the positive side, higher productivity and self-sufficiency in food grain production. वही है socio-economic का positive side. But on the other side, increased inequality in the rural area and displacement of tenant cultivators. ये दोनों उधर हो गया है. So what is this stand for? Increasing inequality in rural society. So there were farmers with कुछ farmers अगर small scale farmers होगा, उसका एक छोटा सा land होगा. दूसरा एक बड़ा सा land था, उसका एक हो गया. तो पहले वो ट्रेडिशनल को ये सब यूज करने से इसका प्रॉफिट था 5 rupees एंड इसका था 10 rupees. बट क्या हो गया, बेस्ड ऑन द साइज वो हमारा यील्ड भी बहुत ज्यादा हो गया है. सो दिस फार्मर्स आर एबल टू इंक्रीज द प्राइस टू आउटपुट टू 10. बट यहाँ क्या हो गया, यहाँ इंटू 10 हो गया 100%. तो उतना ज्यादा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उसका तो इकोनॉमी ज्यादा बढ़ गया है. व्हाट हैपेंड इज देयर इज इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक लेवल में इनइक्वालिटी हो गया. सो देयर इज जमींदार होगा जिसका बहुत ज्यादा है, ही इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ही हैज स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द जो स्मॉलर फार्मर्स. वो शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनेंट कल्टिवेटर्स. टेनेंट्स ऐसा है, वो जो जमींदार है उसमें से रेंटल में लैंड लेगा and he has started cultivating there. But one of the positive side of the green revolution was mechanization. So mechanization शुरू किया है. So the farmers don't need these tenants, the cultivators don't need these tenants. वो अपना से cultivate करना शुरू किया है because human labor बहुत कम है. Instead he can use the machines. So tenants were out of the scene. They don't want to cultivate. They can't cultivate because the cultivator himself can do that. Then displacement of rural urban migration. तो ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपैरेटिवली वो
एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, बट अलीड एक्टिविटीज में ज्यादा हो गया है। जहां से एग्रीकल्चर का आउटपुट मिलता है उसके लेके मार्केट में जाना है, मार्केट में बेच सकता है, तो मार्केट डेवलप हो गया है, तो उधर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा हो गया है, रिलेटेड इंडस्ट्री भी ज्यादा हो गया है, जहां पे मिशन एग्रीकल्चर रिलेटेड मिशन, तो यहाँ से रूरल एरिया यूजुअली फॉर एग्रीकल्चर के लिए, तो उधर से पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज। Then worsen the economic condition of the rural workers. The wage of the rural workers does not increase despite of high productivity. Because of the same, there is worsen the economic condition of the rural workers. Then commercialization and dependency on market. क्योंकि उतना ज्यादा प्रोडक्शन है तो फार्मर्स को अपना यूज है and he is forced to sell that. तो इसमें क्या होगा? He should find the market. Otherwise, there will be middleman. We have seen what is happened 1 or 2 years before. Farmers fighting in the capital because there is middleman होगा, he will exploit. So there is dependency होगा. Regional inequality हो गया and the main चीज ऐसा है, those farmers who were not producing food grains, wheat other than wheat and rice, so उसका क्या हालत होगा? तो उसका कुछ सपोर्ट नहीं मिल जाएगा। those who, so यहाँ से food grains people who were producing other grains like oil seeds ऐसा जैसा दूसरा चीज को बना रहा था, they are also forced to come to this food grain बनाने के लिए शुरू किया है। so non food grains left out. So these are the major socio-economic implications that is being done, that is being happened because of this green revolution. Now we can see the ecological implication. What happened to the environment? The traditional variety of seeds were developed in the country over centuries and lost due to usage of high yield variety seeds and genetically modified seeds. ये यूज करने के लिए शुरू किया है तो क्या हो गया? जो ट्रेडिशनल सीड्स था, ट्रेडिशनल सीड का फायदा है, दे हैव इनफ न्यूट्रिएंट्स देन द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के ज्यादा दे हैव द न्यूट्रिएंट्स, सो ये लॉस्ट हो गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में कंपनी जो मोनोपोली बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार जिस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड डाल दिया है उसके बाद दूसरे क्रॉप उसी एरिया पे नहीं ग्रो पाएगा, डेवलप नहीं होगा, ऐसा वाला सीड्स दे आर गिविंग। तो क्या होगा? द फार्मर्स वांट टू डिपेंड ऑन द सेम प्रोड्यूसर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो देता था उसको ही डिपेंड करना पड़ेगा, सो देयर स्टार्ट द मोनोपोली and first time they will give it for 5 rupees and second time what they know, the farmers have no other choice, so they can raise the price. ऐसा करना शुरू किया है। so we lost the traditional variety crop. traditional तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक हो गया तो दूसरा we can use the second crops, we can use like that, but it is not possible in this high yield variety and genetically modified seeds. The genetically modified seeds are more nutrition value as well. And the second one is the usage of chemical fertilizers leads to water pollution, soil pollution, and again, yeah, this will impact the humans and other biotic organisms there. Chemical fertilizers का use करने से soil का natural quality जाएगा, वो प्राइमरी चीज है। दूसरा है वो केमिकल्स है, सो थ्रू वाटर it will move to all other areas as well. Even it will ruin the water quality, it will ruin the soil quality of that particular area. Other than that, these chemical and fertilizers will kill the microorganisms present in soil. तो क्या होगा? The food chain, it will affect the food chain को ये affect होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ये खाएगा तो ये मर जाएगा, नहीं है तो इसको तो कुछ
चेंजेस होगा। जो बर्ड्स है ना, ये तो फ्रॉग्स ऐसा वाला जो amphibians है which is depending upon these microorganisms, they will also start reducing in their numbers, so it will affect the food chain. Then excess demand of water leads to groundwater depletion as well. तो कुछ हम बोल दिया है क्रॉप्स के लिए तो उतना ज्यादा पानी की जरूरी नहीं है, बट व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज नॉट वन टाइम कल्टीवेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग शुरू किया है, तो व्हेन देयर इज नो वाटर स्टिल वी आर डिपेंडिंग ऑन इरिगेशन, तो किसी और से पानी लेके आना ही होगा फॉर द क्रॉप्स, सो दैट विल अफेक्ट। तो ड्राई सीजन में फॉर कल्टीवेशन इफ वी आर टेकिंग टू मच ऑफ वाटर, that will again ruin or deplete the groundwater potential of that area. So these are the some of the problems of the green revolution. That's it for the day. So today we have discussed about the type of agriculture, then some production का details दिया है, that we will discuss later. Then we have gone through the white revolution and we have gone through the green revolution. Green revolution का socio-economic and ecological impact थोड़ा याद रखना है, because there is chance for asking questions, descriptive type question पूछने का chances है green revolution के लिए। इसी एरिया पे कुछ डाउट है? No, sir. Okay, then we can stop for the day. अभी थोड़ा ज्यादा लेगा because we don't have time. वो पीजीटी का तो आ गया है 7 अगस्त है ना, तो थोड़ा ज्यादा लेगा। ओके, Thank you, sir.